Good afternoon. Hi, Soham. Last time we were doing domain and range sums for the functions, right? Your practice, domain and range. Hello. I think we have done 3 or 4 sums. Now let us do this sum. You are given f of x is square root of x minus 2 into 5 minus x. You have to find domain and range. Now, obviously, domain means you will find the values of x and the corresponding values of f of x or y. They will give you the range of the given function. Now, we have seen that inside the square root, 0 bhi chale ya greater than 0 bhi chale. Then square root of that f of x value is going to be real. So what values of x make x minus 2 into 5 minus x? वो जो रूट के अंदर है एक तो पॉजिटिव या इक्वल टू 0 भी चलेगा, नेगेटिव नहीं चलेगा. स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर. You have learned complex numbers, so you know what it is. They will become the domain of the function. Are you clear how to think? In general, when not specified, we have seen that the domain is set of real numbers. But real numbers से भी अपने को choose करना है. The values of x will make the values of f of x real. Correct? So you know when the product of the two, पहले तो equal to 0 खत्म कर देते. x minus 2 into 5 minus x is equal to 0 कभी होता है बोलो? और x is 2 और x is 5. So ये तो मेरा केस 1 बन गया, मतलब ये वैल्यू चलेंगे मुझे. करेक्ट? ये हो गया मेरा केस 1. और केस 2 होगा मेरा x minus 2 into 5 minus x पॉजिटिव भी चलेगा. Now you can do by many methods, but मेरा logical method है ना सबसे easy है. देखो, when you have product of the two numbers positive, either positive into positive will be positive or negative into negative will be positive. ये समझता है? मतलब या तो दोनों numbers positive या दोनों numbers negative. So मतलब पहला नंबर इज 0 एंड और नहीं एंड दूसरा नंबर इज सॉरी पहला नंबर पॉजिटिव एंड दूसरा नंबर पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव. सो ये आ गया मेरा x इज ग्रेटर देन 2 एंड अभी ये 5 वहां लेके जाओ. सो मेरा आ गया माइनस x इज ग्रेटर देन. समझ रहा है? उधर लेके जाओ, समझेगा? Five minus x is positive.
तो तुम लोगों को और इजी समझा देती हूँ. 5 माइनस एक्स कभी पॉजिटिव होगा, एकदम लॉजिकली बोलो. When x is less than or equal to 5. x 5 भी चले, जो यहाँ हमने लिया है इक्वल टू 0 में, और लेस देन 5 भी चले. इसका मतलब क्या है? I'll draw the number line. अभी हमने देखा अगर ये मुझे कॉम्बिनेशन देना है, चलेगा 5 भी चलेगा, x greater than 2 and x is less than 5 में कॉमन जोन क्या है बोलो? 2 से लेके 5 तक. करेक्ट? हाँ. And now why are they included? Tell me. Screen is frozen again. It's frozen again. 1 minute, please. Can you hear me? Hello? Are you able to hear me? Yes, okay. So what will be the domain? Tell me from the first case. Yeah, positive in place of wavy curve in boards also. Yeah, you can use. बोलो. So मेरा domain आया 2 भी चले, 5 भी चले, and उसके बीच के values भी चले. This you know how to solve ना? ये मैंने directly लिखा logic से. 5 minus x is positive. But ये तुमने, you all have studied this in the, so minus x is greater than minus 5. When you multiply by minus 1, the middle sign will change. ऐसा आता है जो मैंने यहाँ directly लिखा. So domain आया 2 to 5. That your x belongs to this. Okay, clear? Now for range, yeah, you can shift minus x, yeah, चलेगा, no problem. For range अपने को क्या करना है? f of x तो किसी का रूट है, तो ये जो रूट रहता है, रूट ऑफ एनी नंबर, इट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव. पता है आपको? रूट इज इट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव. सो अपने को क्या करना है? f of x is greater than or equal to 0. Are you getting it? तो अभी हम लोग जो f of x क्या है मेरा बोलो? Square root of x minus 2 into 5 minus x. तो ये सॉल्व कर लो, आप क्या आएगा? 5x minus x square minus 10 and plus 2x. रूट के अंदर, ये रूट के अंदर का मैं लिखा. सो ये रूट के अंदर है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x minus 10. So multiply throughout by minus 1.
You know, inside the root, your f of x is defined if x minus 2 into 5 minus x is non-negative, correct? हाँ? तो इसका आंसर अपना है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 greater than or equal to 0. So multiply throughout by minus sign. So x square minus 7x plus 10. When I multiply by a negative sign, the middle sign will change. ये अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, अगर आपको याद है. How do you find last term? It is middle term का square upon 4 into first term to find the last term of the perfect square. So middle term is minus 7x. तो उसका square है 49x square upon 4 into first term is x square, जो ये first term है. So आया मेरा 49 by 4. So you add 49 by 4 on both sides. So ये आ गया मेरा x. बीच का माइनस साइन 7 by 2 the whole square is sorry अलग है less than or equal. Correct? Everybody followed this? हाँ? तो ऐसे भी कर सकते हो आप. Now you know you have learned. This is method 2. Yes, method 2 for domain. हम लोगों ने क्या सीखा था? If x square is less than a square, then x lies between minus a and a. So x minus 7 by 2 will lie equal to sign है, इसलिए equal to sign. इसका स्क्वायर रूट है 3 by 2. So यहाँ ये साइड आएगा minus 3 by 2 to plus 3 by 2. So ये my adding 7 by 2 on either side. This is method 2 I'm showing you for solving or for getting the domain, huh? So ये आ गया 2 less than x is less than 5. ये आ गया domain. You can do by this method also. Are you very clear? कैसे ऐसे करो वैसे करो कैसे भी. So basically इसमें हम लोगों ने क्या देखा ये नंबर x minus 7 by 2 the whole square. So मेरा x अगर रियल है तो x minus 7 by 2 भी रियल होगा. So square of a real number is non-negative. It is 0 or positive. So जो हमने किया था x square minus 7x plus 4. So minus x square plus 7x minus 49 by 4. करेक्ट. तो अभी आप देखो मेरा f of x का सॉल्विंग क्या था, देखो जरा. what was my solving? It was this original. मुझे ये लाना है कि I can put it as root of f of x. करेक्ट. सो मुझे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 चाहिए. तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x, अभी मुझे चाहिए माइनस 10. ये यहाँ पे लेके आओ. I subtracted. So ये मेरा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10.
अभी स्क्वायर रूट लेना, पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स. Square root of 9/4 is only 3/2. ये क्या है मेरा, बोलो, what is this, tell me? ये क्या है? Is it not my f of x is less than or equal to 3/2? You know, बहुत बार है ना, जब भी आप सॉल्व करते हो ना, तो स्टूडेंट्स लोग यही छोड़ते हैं, and if this is one of the options, they give this option right, but it is a answer halfway through. What we have seen, your f of x will be defined only if root of f of x, yeah, you are not able to hear me, Rutuja. Lag झाला. Oh. What do I do? Check now. Okay, some are able to hear, some are not able to hear. Okay. So we did domain and range. You all aware of the graphs of a function? Doubt in method 1, you use positive into positive simultaneously. No, beta. See, what is the mistake, Rutuja, in what you have written is, देखो, I said positive into positive is positive. कहाँ गया मेरा first method? एक मिनट, हाँ, ये, correct? I will show you negative into negative लेने से क्या होता है, हाँ? I'll show you here on case 2 का पहला नंबर नेगेटिव, that is पहला नंबर नेगेटिव and दूसरा नंबर also negative, correct? So ये क्या आ गया? X is less than 2 and ये X shift करते हैं तो 5 is less than X, मतलब X is greater than 5. इतना तो मानते हो आप? आपने यहाँ और लिया है, और is union and मतलब ऐसा कोई नंबर है जो 2 से छोटा है and 5 से बड़ा है, so ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, not possible. और is union and is intersection. अब कोई बच्चा है जिसकी उम्र 2 से छोटी हो बट 5 से बड़ी हो, and both should be satisfied, then only the product will be positive. You are getting it, everybody? Rutuja, that is the reason I did not consider, that is not possible. So I showed you both the methods for a domain, and did you understand how I arrived? No value exists, yes. And range also samjha properly. Great. Now we'll do little graphs. Though you will be doing एक है ना उसमें टेस्ट है, एक है वर्टिकल लाइन टेस्ट. हैव यू डन ऑल दैट? बिकॉज आप लोगों ने आगे का पोर्शन कर लिया है, सर ने मुझे बोला, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव्स सारा कर लिया है, राइट? So
So you have done a vertical line test. Yes, horizontal and vertical. No, very good. So you know कि अगर कोई भी मेरा ग्राफ है तो अगर वो मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, इफ इट इज इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट ओनली, करेक्ट, बट जैसे ये है तो ये भी पॉइंट है एंड ये भी पॉइंट है, सो ये दिस इज नॉट अ फंक्शन एंड ये है फंक्शन, करेक्ट. So you know horizontal line test also. So I will just mention and I'll go ahead, okay? You know what is a constant function? What is a constant function, Guru? If it is in the form of f of x is equal to constant. F of x means basically y is equal to constant is the line parallel to the x-axis. Yeah, it has zero slope. इसका ग्राफ कैसे आएगा? This is the graph of f of x is equal to t. इसका by any chance can anybody answer इसका domain and range क्या होगा? Domain and range क्या होगा इसका? Domain होगा r, any real number, but range होगा k. It will be many to one function. r कुछ भी हो, but f of x का value will be only k. So उसका range होगा only k. वो भी मुझे it's an element of the set. ये होगा set. Got it? Everybody understands this constant function? Yeah? You know what is identity function? Your f of x is same as x. So इसका रहेगा domain and range, no restriction, both are r. Y is equal to x. Yeah. Understood? Obviously, the slope of this line is going to be 1, inclination will be 45 degrees. Identity function, मतलब इसका pre-image and image are always same. Power function. Yes, the line is passing through the origin, I showed now. Correct? Y equal to x, that is a line. Correct? Power function is some constant into x raised to n. तो उसमें स्क्वायर फंक्शन हो सकता है, इसमें क्यूब फंक्शन हो सकता है, करेक्ट? मतलब ये होगा मेरा f of x as x square, ये होगा f of x as x cube या 2x cube या 3x cube, but x square plus x cube उसको बोलते हैं polynomial function. More than 2 पावर आ गए कि वो पावर फंक्शन नहीं है. पावर फंक्शन में एक ही टर्म होगा, उसको कांस्टेंट चलेगा, 2x स्क्वायर चलेगा, 5x स्क्वायर चलेगा, हाफ x स्क्वायर चलेगा, बट x स्क्वायर के साथ और कांस्टेंट नहीं आएगा, कोई और पावर ऑफ x नहीं आएगा. Can what will be the domain
Yeah, this will be a real number. This will be the natural number. This will be the real number. डोमेन क्या होगा इसका? There is no restriction. Constant function, yes. ले लो. Rishikesh, tell me when it is done. Okay, thank you. ये भी लेना है identity and all. भी यहाँ कैसे सोचते हैं ना, डोमेन तो कुछ भी चलेगा, x का वैल्यू कुछ भी चलेगा, एनी रियल नंबर, बट f of x is y. So if y is x का square, then x will be root of y. तो रूट के अंदर निगेटिव नहीं चलेगा, रूट के अंदर निगेटिव नहीं चलेगा, तो जीरो चलेगा या एनी पॉजिटिव चलेगा. तो ये हो गया रेंज स्क्वायर का. इज दैट क्लियर हाउ टू थिंक? या क्यूबिकल के लिए ये क्यूब फंक्शन के लिए कोई पाबंदी नहीं, बिकॉज अपने को क्यूब के अंदर पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, सब होता है. सो ये दिस कैन बी ओनली आर. परफेक्ट, करेक्ट. That is the reason ये zero. अभी polynomial function ऐसा कर सकते हैं आप. f of x is a कुछ constant plus some other constant into x plus some other constant into x square. ऐसे जाते 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 कितने भी constant plus some other constant m into x raised to n. ऐसे ऐसे ABCD सीरियली नहीं है, कितने भी हो सकते हैं m. They are all real numbers. And powers of x, x raised to 1, x raised to 2, they are non-negative integers. n non मतलब जीरो या पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब होल नंबर्स. राइट राइट राइट. You know, I can have f of x as 3 minus 4x plus 5x square plus 7x cube. ये हो गया मेरा polynomial function. But f of x is x minus 1 by x. ये denominator is x raised to minus 1. ये power negative नहीं चलेगा. या root x plus 5 ये है x raised to half. Fraction भी नहीं चलेगा. You understand? This is the polynomial function. Now we'll go to the next type. Linear function. ये तो हम लोगों ने 8, 9 से किया था. Every linear function in x and y represents, yeah, a straight line. ऐसे फॉर्म. लीनियर फंक्शन, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं. तो डोमेन भी आर, या
एंड रेंज भी है, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है. Just revising all. You've done the graphs of all functions. ये पॉलिनोमियल का ही टाइप है. ये एक्चुअली में फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल. सेकंड टाइप ऐसे आप ले सकते हो क्वाड्रेटिक. ऐसा कुछ आएगा. क्वाड्रेटिक में पावर ऑफ डिग्री 2 इज अ मस्ट. पावर ऑफ करेक्ट. तो a should not be 0. a b c all are real numbers. इसमें भी there is no denominator, so मेरा डोमेन हो गया R. So range will have different answers for a greater than 0. It will be, मतलब you have to solve a less than 0 and a cannot be 0. Depends on positive, negative. उसके हिसाब से अपने को आंसर लिखना पड़ता है. That depends on the sum. We'll have to solve. I have already taught you how to make it a perfect square. What is a cubic function? बोलो क्या होगा cubic function? ये सारे polynomial function ही है. Yeah, degree 3, correct. ऐसे आएगा. ये cubic function में your d will not be 0. Yeah, correct. You can write like this. So यहाँ भी cubical है तो कोई problem नहीं. Domain and range both are R. क्यूबिक फंक्शन में क्या है ना, और पावर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं. यू कैन हैव इनसाइड में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी. देन यू विल हैव a radical function. रेडिकल फंक्शन में ना हम लोग स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वगैरह लेते हैं. अगर ऐसा है f of x is some constant k into x raised to 1 by n where n belongs to n, or you can write this as k into nth root of x. इसको बोलते हैं radical function. जैसे I'll give you an example. x raised to half. ये जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी बोल चुके हैं, इसको स्क्वायर रूट फंक्शन बोलते हैं. करेक्ट. तो उसका डोमेन एंड रेंज क्या होगा? दोनों निगेटिव नहीं होंगे तो 0 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी चले. करेक्ट. सम दैट बी सॉल्व्ड x स्क्वायर 7x वाला. आई यूज द सेम थिंग. रूट के अंदर 0 या पॉजिटिव, और उसका आंसर भी है वो रूट है, तो स्क्वायर रूट कैन नॉट बी नेगेटिव. सो यू विल हैव टू राइट डोमेन एंड रेंज बोथ आर 0 to infinity. Another example, cube root of. इसके लिए तो मजा है. डोमेन रेंज बोथ आर, बोलो R. करेक्ट. इसका ना कुछ ऐसे दिखता है क्यूब रूट का. ऐसे जाता है ग्राफ. स्क्वायर रूट का तो आपको पता है ना, ये कैसे करना है मालूम है. f of x का मतलब क्या है? y is root of x. x is y square. तो आप लोगों ने पैराबोला तो सीखा ही है ना. 0 to infinity है तो नीचे नहीं जाता.
goes this way. लॉजिक अप्लाई करो. All right. Yeah. You have a rational function. What is a rational function? Polynomial upon polynomial, where polynomial should not be zero, otherwise it will not be defined only. Yes, inverse graph, perfect. This is polynomial upon polynomial. When polynomial in the denominator is not zero, is called a rational function. ये ना आगे जाके आप continuity सीखोगे. तो continuity में I'll give you an example. F of x continuity done, so you know it. Na? This function will not be defined at x is equal to 2. Yeah, polynomial upon polynomial. So f is a rational function. At x equal to 2, the denominator turns 0, so function will not exist. Correct? कौन सा? If the power is integer and negative, मतलब ऐसे बोल रहे हो आप? ऐसे? हाँ, तो मैंने दिखाया ना आपको रेडिकल ये रेसिप्रोकल फंक्शन है वो. I'll do that, don't worry. ये है तो रैशनल फंक्शन ही. ये जो आप बोले ना, ये रैशनल फंक्शन के अंदर ही आएगा. Because one polynomial है, x cube polynomial है, polynomial upon polynomial. So it's a rational function. So ये particular sum में इसका range, इसका domain होगा every real number except 0. Correct? यहाँ क्या आएगा range बोलो? पहले domain बोलो. It will be every real number except 2. और रेंज कैसे निकालते हैं इसका? रेंज पता है? I taught you. You will take it as क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x वाले टर्म साथ में लो. करेक्ट? So xy minus y is 2y plus 3. So y taken common, x minus 1. Getting it? xy, sorry, minus x चाहिए. Okay. So x taken common, ऐसे ले लो. Everybody is getting it? I just cross multiplied. xy minus 2y is x plus 3. I want to make x as a subject. xy minus x है ना ये. So x taken common, y minus 1. Yes. बोलो तो. Correct? And this, हाँ, दिखा दियो. Right? x वाले terms ये मेरा x है. You follow? So make x as a subject for range. So tell me, again, is it not a polynomial function? So इसका what will be the range बोलो? Every real number except y is equal to 1, at which it will not be defined. Got it? डोमेन के लिए अपने को x ढूंढना है और रेंज के लिए अपने को y ढूंढना है जो सेटिस्फाई नहीं करेगा. Am I clear?
नहीं सेम थोड़ी ना आया. Y's domain was x's range. Means limitations on y, yeah, in range. That's correct. But x values will not give you range. Values of y. Correct? Okay. So are you clear about this? अगर मुझे कोई ऐसे देता है, because you know how to solve the sum now, I'm not worried about that. ऐसे कोई देता है, और अगर इसका कोई डोमेन पूछता है तो क्या आएगा बोलो? It will be every real number except 2 and minus 2. Because x square minus 4 is 0. So x square is 4. So x is plus or minus 2. So at plus or minus 2, the function will not be defined. Yeah? ये समझा सारा rational function का? Have you learned exponential function? Y or f of x is some power a raised to x, where a should be positive. भी इसका ग्राफ कैसे दिखता है? Yeah, x belongs to R. Perfect. Now say if a is greater than 1, e raised to x is a special type of this. Yes, it's an exponential function. When the value of a is e, तो ऐसे आ जाता है. ये जो पॉइंट है ना ये, you know, anything raised to 0 वो 1 आने वाला है. Yes, तो ये 1 होगा. ऐसा जाए. It will not go negative में. Getting it? This will be f of x is a raised to x for a greater than 1. And a raised to 0 will be 1. So it will cut the y-axis at 0, 1. अगर मेरा से a से a is 1/3. So f of x is 1/3 bracket raised to x. Now it is 1/3 raised to x. So it is as good as 3 raised to minus x. समझा? Okay. Okay. At 1 they will intersect. This is ये हो गया मेरा ग्राफ of y is equal to 1/3x for a less than 1. Same thing for e raised to x. ये आएगा. This is a special case. f of x as e raised to x. और यहाँ 3 raised to minus x के बदले I can write this is a special case. E raised to minus x. ऐसे सिचुएशन में डोमेन पे क्या है? डोमेन वैल्यू ऑफ x could be anything.
बट रेंज इज 0 भी नहीं हो रहा है, करेक्ट? यस, 0 से भी बड़ा है, पॉजिटिव साइड में रह रहा है. 0 to infinity will be the range. Or you can write the other way, ranges. Correct? All of you are very clear. See, after today's lecture, na, sir was telling me I will be taking directly in the month of September for your batch. So, I mean, if you have any doubts, you can send your doubts to Hemani ma'am, or I don't know, ask them if my number can be shared so I can clear your doubts. All right? Because sir said that he has done the rest of the portion. Yeah. So logarithmic function. This way I didn't detail last time. You remember? Y is log of x to the base a. इसका भी डोमेन मैंने आपको बोला था, निगेटिव होता ही नहीं है, 0 भी नहीं होता है. E raised to x is a special case of a raised to x, because a can be 2, a can be 3, a can be 4. One of the values of a is e, which is 2.7182813. It's an irrational number, correct? तो logarithmic function का डोमेन है 0 से लेके infinity तक. रेंज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं. We will draw the graph. You know, log of 1 is 0. So log of a 1 to any base is 0. This, you know, you can write in exponential form also. X is a raised to y. You can write like this also, exponential form. So log of a 1 is 0. Okay. So it will cut the x's at 1, 0, your function. It will go like this. ये है 1, 0. Correct? It is f of x is a log to the base and 1. ये टाइप का ग्राफ आएगा for a greater than 1. And if